Good morning, everyone. We start with a morning call. We start with technicals and derivatives. So the Nifty is now, in yesterday's session, we have seen the Nifty has rallied and Nifty has almost traded close to 17,950. And even the bank Nifty saw some good amount of buying in yesterday's session. So what we believe is that Nifty was the earlier view of 18,000 on Nifty and 40,000 on the bank Nifty still looks promising, and that should be the view for the day. From the derivatives perspective, again, the longs were added in yesterday's session, and even in the bank Nifty, the longs were added. Only in the last couple of the last two sessions in bank Nifty, there was slightly sideways move was going on, but then again in yesterday's session, the fresh longs were added, which makes us believe that again the positive momentum will be seen in today's session. Being a weekly expiry, any decline during the day, I think we should be looking for a buying opportunity. The maximum, as per the derivatives data, the 17,900 and 17,800, lots of put writing has been seen. So basically, that will act as a support from the Nifty point of view. So during the day, close to 17,900, हाँ, वो साल के हिसाब से रख सकते 2 साल के लिए. So during the day, declines close to 17,900 should be viewed to go long in the Nifty specifically. Bank Nifty, the put trading was seen close to 39,000 levels. So maybe Bank Nifty might not be that promising, but then Nifty can be viewed to go for the call option during the day for the weekly expiry. On a cautious note, the put call ratio, which was at 1.26, has now come to 1.4. So slightly anywhere close to 1.6, 1.8 is a level where the market might find some resistance. So we have to consider this also. But having said this, the view is positive. So at least for next 1 or 2 days, we maintain that we should be testing 18,000 and 40,000 on the Bank Nifty. Stock specific, Tata Power, Glenmark, and Canara Bank are the few stocks which are looking positive. So any declines, intraday declines during the day can be viewed to go long in this position. If you look at the FI data, again in cash, they have added long positions close to 2,347 crores, and the DI was the net sellers by 510 crores. Whereas in the if you look at the FI's index position, they were neutral. They are not added or reduced much of any position. That remains same. They were overall 58% long in the market. The call for the day is Canara Bank in the technical report. We are recommending a buy in the range of 237 to 236 with a stop loss of 232 for the target of 245. In the derivatives outlook, we are recommended buy in HDFC Bank futures in the range of 1501 to 1509, stop loss of 1478 for the target of 1557. That's all from technical. Over to Archana. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So a few updates from my side, starting with ONGC. So the shares of ONGC will be in focus as it has signed a heads of agreement with global petroleum giant ExxonMobil for deep water exploration in east and west coast of India. The collaboration areas focus on the Krishna, Godavari and Kaveri basins in the eastern offshore and the Kutch Mumbai region in the western offshore. On Natco Pharma, the company has received tentative approval to its abbreviated new drug application for travoxetine for injection for 1 mg vial, it said in BSC filing. This is, as per the sales data, so generated annual sales of 49.7 million USD for 12 months ending June 2022 in the US markets. On Indoamines, the company has received an environment clearance for expansion of synthetic organic chemical for its manufacturing plants in Thane and Dhule in Maharashtra. So that is a positive development on the company's front. Craftsman Automation, the company has commenced the commercial operations for its new or additional plant at Pune in Maharashtra. Again, positive for the company. On GAIL, the company says its board has approved additional fundraising of 3.1 billion USD via external commercial borrowing and up to rupees 25,000 crore via non-convertible debentures. On Sona BMW Precision, so Blackstone is supposed to sell 10.8% stake in the company
So this is like with upsize option of 1.58 crore shares, representing 2.72% stake at price of 500 per share, which is like 7.3% discount on yesterday's closing price. So we believe there could be some downside in the stock price, but that should be considered as a buying opportunity, and we are pretty positive on Sona BMW. Yesterday, TRAI declared their monthly addition or reduction of mobile subscribers. So Reliance Jio has added 4.2 million mobile subscribers in June month, while Bharti has added close to 8 lakh mobile subscribers, while Vodafone has lost 1.8 million mobile subscribers. Given the strong addition by Reliance Jio and Bharti, We are not able to hear. is this better, sir? Yeah, now we can hear you. Yeah. So there are two updates on FMCG. Firstly, on the Godrej Consumer Products, the company is likely to cut prices during October to December quarter due to softening of input inflation. This quarter is the festive season when sales are high. The management expects raw material prices to either stabilize or decline in the coming 12 to 18 months. Now, GCPL will also increase the advertising expenditure in the remaining quarters of FY23. Generally, ad spends are likely to grow to high single digit to double digit as a percentage of revenue for India business. And for international business, ad spends are likely to grow by 150 bips for the company. The company believes with price drop and higher ad spends, gross margins are likely to expand going forward. We currently have buy rating on the stock with a target price of 1,000. And lastly, on DMart, we attended DMart's AGM. The company plans to expand its store count to 1,500 from current 1,200, current 284. No timeline has provided. DMart also aims to scale up its unprofitable e-commerce business. CEO stated that entering the online retail market has been difficult. However, company plans to add more online fulfillment centers in Mumbai. Currently, there are just two centers. Companies experimenting with smaller stores in Mumbai and Hyderabad, where the real estate is expensive. Management believes that in the organized brick and mortar retail space, which is growing at 20 to 25% annually, adding more stores is a way to grow business. We have buy rating on the stock with a target price of 4571. So that's it from my side. Now I hand it over to Hitendra for further research updates. Thank you, and over to you, Hitendra. Yeah, thank you and good morning, everyone. Continuing with the TRAI has said that they received an upfront payment from this Bharti Airtel, Reliance, Jio, Adani Data, and Vodafone Idea. Bharti Airtel has paid 8,312 crore, while Reliance Jio has made a payment of 7,864 crores. Vodafone Idea has made a payment of 1,679 crores, and Adani Data of 18,994 crores. Secondly, if you see, Bank of Baroda is going to raise 1,000 crores by issuing bonds for financing infrastructure and affordable housing segment. And this bonds would be for the tenure of 7 years and will offer a coupon rate of 7.39%. Next, if you see, IRB Infra has got an upgrade from India Rating Research, and they had upgraded it to AA minus from AA minus to IND APS with a stable outlook. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Good morning, team. ITDC will have a roadshow on 22nd August to monetize its property. It has a major property in Delhi where it will be monetized, and there are different these things which they have done now, how to monetize and other things. Oil marketing companies, OMCs as they're called, IOC, BPCL and HPCL, short-term borrowings is up 17%. In FY22 at 73,000 crores. It is because of lack of price hike, which happened due to state election in UP and few other states, where OMCs were making losses. China has a huge power shortage, which has hit steel mills and even other industries. Even aluminium sector has been impacted, because of which few prices have gone up and few prices have come down.
So metals will be very volatile. Aluminium related thing will move higher, whereas raw material thing will come lower. Yesterday, Gujarat Alkali Chemical uploaded the presentation in the NSE and BSE website. Now, very interesting is, they have a loan of 620 crores. The book value for the company is 653 crores. And the total project which will come on stream in the next 1-2 months, whatever they have invested in FY23 and which is almost, which has come or which is likely to come is 4,185 crore project. And the total expansion plan they had in mind was 5,380 crores. And their exports are really picking up. Last year they did 500 crores as export. This year, this quarter, the export was almost 138 crores. And if you extrapolate whatever EPS they have done, 120 should be the EPS for the company. So if that is a run rate, I think very soon the stock should be trading at 1,100 to 1,200. And in the last 3-4 days itself, we have seen almost 15% rally in the stock, but this stock will continue to rise as foreign funds have started to increase stake there. Hitendra was talking about Airtel prepaying. Now almost 4 years of spectrum, 5G spectrum, upfront. Now they have paid 8,312 crores. This is very interesting. Why they have paid it up front loaded? Because they want to start giving the service, and there are other expenses which they have to do. So they don't want to concentrate on spectrum charges. They want to concentrate on infrastructure. So for 4 years they have paid it upfront, which is very positive for Bharati Airtel. Even Jio has paid, but they have paid only for this year. Adani also has paid, whereas BSNL, Vodafone Idea has not paid. Tara has come with June 22 data, where 18 lakh subscribers have been added. Jio added 42 lakh. Now, so their total subscriber base is 41 crores. Airtel added 7.9 lakh. So their total subscriber base is 36 crore, 20 lakhs. Whereas Vodafone Idea has lost subscriber of 18 lakh. So that their subscriber base is 25 crore, 25.6 crore. BSNL also lost 13 lakh subscriber. So it stands at 11.1 crore. So Jio is a market leader with 36%, followed by Airtel at 31.63. Now we think short-term rally in Airtel is possible. And now Archana updated about the block deal in Sona BLW. Now we need to understand, Blackstone was having a huge stake, almost 60%. Today it is at 34%, and now almost 14% they are giving. But Blackstone internationally is having a problem. That is why they are liquidating most of their investment. Now, when it is an unlisted stock, you don't get a exit route, but when it is a listed entity, your exit is easily clear. Even in the case of Max Healthcare, where KKR was holding a stake, they also exited. So these kind of things normally happen. And there are many companies which are professionally run, where PE funds do the running of the business. So there, these kind of things will happen. So I think this would be an opportunity for people who want to buy. Now there is one report which says that in car trade also on 20th of August, the 1 year lock-in period gets over. After that, there also selling pressure will come in these kind of entity. But for a long-term investor, 500 rupees is a throwaway price, is what my analyst is saying. Cochin Shipyard has opened a shipbuilding unit in Howrah at 180 crores. And this is very positive for Cochin Shipyard. I think this is one stock we like, and any correction would be an opportunity to buy. With that, over to you, Sitija.
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। कल ओएनजीसी जो कंपनी है उन्होंने हेड ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है ग्लोबल ऑयल के जो एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन है उनके साथ। बेसिकली ये कंपनी जो कंट्री की जो डीप सी है कंट्री के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में उसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस का काम करती है। और ये जो 2 ऑयल एक्सप्लोरर है वो फोकस करेंगे कृष्णा गोदावरी और कावेरी जो बेस है वहां पे, जो ईस्टर्न ऑफशोर और कच्छ मुंबई रीजन के वेस्टर्न ऑफशोर के लिए। नेक्स्ट अपडेट है सोना बीएलडब्ल्यू जो सोना कॉमस्टार है कंपनी, उनमें जो ब्लैकस्टोन है वो अभी रेस करने वाली है 318 करोड़ थ्रू सेल ऑफ शेयर्स। जो अभी तक ब्लैकस्टोन का जो ह्यूज स्टेक था ये कंपनी में 60% का, जो अभी जाके 34% होगा। बेसिकली ये जो कंपनी है ब्लैकस्टोन, उनको इंटरनेशनली थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो लिस्टेड जो कंपनी है उसमें एग्जिट मिलना बहुत ही ईजी है, तो वो स्टेक अपना सेल करके कर रहे हैं। ये नॉर्मली ऐसे होता है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो करेक्शन के टाइम आप ये स्टॉक को बाय कर सकते हो। और हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर सोनाकॉम के पॉजिटिव है। नाटको फार्मा के ऊपर एक अपडेट था कि उनको टेंटेटिव अप्रूवल मिला है एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, जो ट्रैबिक्टिन जो इंजेक्शन है 1 mg वाइल का, और ये जेनरिक ड्रग है, वो योंडल स्किल के लिए काम करता है। और अकॉर्डिंग टू जो इंडस्ट्री डेटा है तो ये जनरेट करता है एनुअल सेल्स अप्रॉक्स $49.7 मिलियन, जो लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है। उसके बाद अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो रेज करेंगे 1000 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ जो बॉन्ड है उसके हिसाब से, और ये फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। और इसका जो टेनेचर रहेगा वो 7 इयर्स का है, और कूपन रेट है वो 7.39% है। नेक्स्ट अपडेट है गेल के ऊपर। कंपनी ने जो रिसीव बोर्ड ऑफ अप्रूवल है उनको रिसीव मिला है कि वो एडिशनल फंड रेजिंग कर सकते हैं $3.125 बिलियन का, और ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से होगा, और जो 25,000 करोड़ है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से होगा। नेक्स्ट अपडेट है इन्फीबीम एवेन्यू के ऊपर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी फंड रेजिंग के लिए मीटिंग है 25 अगस्त के ऊपर। इंडो अमाइंस कंपनी है, उनको एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है जो एक्सपांशन करेंगी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्शन, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वो थाने और धुले में होगा, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है जो टीआरआई का डेटा है उसमें 4.2 मिलियन जियो के सब्सक्राइबर ऐड मोबाइल सब्सक्राइबर ऐड हुए, 8 लाख और अप्रॉक्स मोबाइल सब्सक्राइबर भारती के ऐड हुए, और वोडाफोन आइडिया के 1.8 लॉस हो चुके हैं सब्सक्राइबर। नेक्स्ट अपडेट है डीमार्ट के ऊपर। जो डीमार्ट जो कंपनी है उनके कल एजीएम हुई थी, तो कंपनी ने बोला है कि वो उनका प्लान है कि वो एक्सपांड करेंगे स्टोर्स जो 1500 है, जो अभी करंट है 284। सो इसके लिए उन्होंने कुछ टाइम लाइन प्रोवाइड नहीं की है, और उनका डीमार्ट ने एम किया है कि वो स्केल अप करेंगे अनप्रॉफिटेबल जो ई कॉमर्स बिजनेस है वहाँ पे। और उनके जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि वो एंटर करेंगे ऑनलाइन रिटेल मार्केट में, जो स्लाइटली अभी डिफिकल्ट है, और कंपनी का प्लान है कि वो और ऐड करेंगे ऑनलाइन फुलफिलमेंट सेंटर्स मुंबई में। करंटली जो अभी है वो 2 है, और कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही है स्मॉलर स्टोर्स मुंबई में, और हैदराबाद जो रियल एस्टेट है ये जो एक्सपेंसिव है। डीमार्ट ने उनसे बोला है कि वो स्टार्ट करेंगे सेलिंग पिज्जा फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्टोर, मतलब जो एक स्टोर है वहां से। और इसका जो मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपनी इकोनॉमी जो है ग्रो हो रही है, और पीपल है जो उनके पास कम टाइम है, तो उनको कंफर्ट के लिए, मतलब ऐसे बोलते हैं कि कंफर्ट के लिए फूड और जो डिमांड है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, तो हाई क्वालिटी फूड लोअर प्राइस में ये कंपनी देगी। तो कंपनी का बिलीफ है कि वो ओवरऑल रिटेल स्पेस में ग्रो करेंगे 20 to 25% से एनुअली, और वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स जो है वो ग्रो बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे। तो ओवरऑल हम लोग का जो व्यू है वो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और बाय रेटिंग है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो उनके लैक ऑफ प्राइजेस थी हाई, मतलब उन्होंने जो प्राइस हाइक जब भी इलेक्शन के टाइम में ली थी वो कम दी थी उसके कारण, तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल है, उनके शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्रीज हो चुके हैं।
नेक्स्ट अपडेट है चाइना में पावर शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे फैक्ट्रीज है वहाँ पे पावर कट हुआ है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इसका इम्पैक्ट आप मेटल स्टॉक के ऊपर देख सकते हो। मेटल स्टॉक वेरी वोलेटाइल हो सकते हैं और जो एल्यूमिनियम बेस है वो उसका उनको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है गुजरात अल्कली के ऊपर। कंपनी की ने कल एक्सचेंज पे उनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो अपडेट किया, तो उनका जो लोन है वो 620 करोड़ है और उनकी जो बुक वैल्यू है कि अराउंड 653 करोड़ है, और कंपनी को आने वाले जो टोटल प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में 4185 करोड़ है, और जो कंपनी का एक्सपांशन करने का प्लान है वो कुछ अराउंड 5383 करोड़ है। तो ये उनका ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो भी अभी पिकअप हो रहा है। जो लास्ट ईयर मतलब ये क्वार्टर में उनका जो एक्सपोर्ट है वो 138 करोड़ हुआ है। लास्ट 3-4 डेज में हम लोगों ने देखा कि 15% रैली ये स्टॉक में देखी गई है, और वेरी सुन मतलब बहुत ही जल्दी ये स्टॉक में आप 1200 आप देख सकते हो। तो हम लोग इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है। नेक्स्ट अपडेट है कार ट्रेड के ऊपर। 24 अगस्त को 1 ईयर मतलब लॉक इन जो पीरियड है उसके लिए 1 ईयर होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, तो आप ये स्टॉक में सेलिंग देख सकते हो। बट 5000 वो प्राइस है वो थ्रो अवे है, ये ऐसा हमारा जो एनालिस्ट का कहना है। तो उसके बाद अपडेट है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर भी, उसके ऊपर एक अपडेट आया, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो आप हम लोग को ये स्टॉक पसंद है, डिफेंस सेगमेंट में कोई भी करेक्शन मिलता है तो ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हो। जो नेक्स्ट अपडेट है आईआरबी इंफ्रा है, जो इंडियन रेटिंग रिसर्च कंपनी है, उन्होंने अपग्रेड किया है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। जो रेटिंग इंडिया ए नेगेटिव था तो वो इंडिया A+ किया है, और जो आउटलुक है वो स्टेबल है। जो नेक्स्ट अपडेट है जो टेलीकॉम कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उनको अपफ्रंट पेमेंट मिला है 5G स्पेक्ट्रम का, उसमें 876 करोड़ भारतीय एयरटेल ने पेड किया है। नहीं टोटल उनको अपफ्रंट मिला है 17,876 करोड़ का, उसमें से भारतीय एयरटेल ने पेड किया 8,312 करोड़, रिलायंस ने पे किया है 7,864 करोड़, और वोडाफोन आइडिया ने 1,679 करोड़ का पे किया, और अदानी ने 18 करोड़ के आसपास पे किया है। तो ये भारतीय एयरटेल ने सबसे ज्यादा पे करके उन्होंने फोकस किया है कि वो अभी जो 5G स्पेक्ट्रम है उसका जो कॉन्सेंट्रेट चार्जेस अभी पे के बाद में वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते, वो अभी फोकस करेंगे फिर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव रहेगा भारतीय एयरटेल के लिए, और ये हम लोग शॉर्ट टर्म रैली भारतीय एयरटेल में देख सकते हैं, और हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी भारतीय एयरटेल के ऊपर पॉजिटिव है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the con call. Have a nice day.